How fortunate do you feel when reminded that you have the freedom to say whatever you want without the fear of retaliation? Freedom of speech has taken many Christians' lives in the Islamic Republic of Pakistan. Many have come to light through media's grace, and many have been buried in the most silent graves, also by media. Many families are broken, relationships die, and loved ones are lost in the midst of the consequences of uttering a few words. In a country like Pakistan, where there is zero tolerance for your words, just imagine the cost of doing tangible things that go against Muslim faith. Illiteracy has even taken over the educated part of Pakistan because of the fear of going against Islam. The situation of religious minorities in Pakistan is getting worse and worse. There are indicators showing that Pakistan is suffering from religious extremism more severely than any other country of the world. This is proved by the Pew Research Center report, Global Restrictions on Religion. And the problem is that the international community seems to ignore that fact that many people are suffering very, very severely in Pakistan under the heavy pressure of society and the government under blasphemy law, which is very, very unjust and unfair towards especially religious minorities, and among those especially against Christians. मेरा नाम शफ़क़त नथानियल है और मैं योहानाबाद से हूँ, लाहौर पाकिस्तान से हूँ। और मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जैसे कि ये हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान के ख़राब शुरू ही से होते आ रहे हैं और अब भी उससे ज़्यादा हुए हैं। वहाँ से जो हालात थे और उन हालात में हम वहाँ से निकले, अपनी जानें बचाकर यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर भी हमें वो सिक्योरिटी नहीं है और हमें वो सहूलियात नहीं मिल रही है, ना हमारे पास जॉब है, ना और हमारे पास कुछ ऐसे वसाइल हैं, ज़राए हैं जिसको हम रन कर सकें। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ पर हूँ। मेरी 2 बच्चियों की एजुकेशन रुकी हुई है और अगर हम ये कहें कि हम अपनी खुशी से यहाँ पर आए तो हमारी इसमें कोई खुशी नहीं है। कोई अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागता, ना कोई निकलता, अपने मुल्क में खुश रहना चाहता है। If Christians flee to other countries from Pakistan, often they face the problem that the authorities taking care of refugees, like the United Nations Refugee Organization, UNHCR, they are not properly informed about the bad situation of Christians in Pakistan, and therefore many of those cases are rejected, even though it can be proved that they are facing death threats and really severe danger also for their kids in their home country. और दूसरा ये कि वहाँ से जो पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर ये एक्सप्लेन किया है, बताया है कि जी जितने यहाँ मसीही पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं वो अपनी खुशी से आए हैं, कोई खुशी से नहीं है, मुश्किलात से और हालात से 2-4 होकर हम यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर भी मुश्किल में हैं। और अगर आप देखें योहानाबाद के हालात मसीहों के साथ जो शुरू से होते आ रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर मसीहों के लिए। और इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं समझती हूँ ये बड़ी बात है कि हम वहाँ से अपनी जानें बचाकर यहाँ निकल कर आए हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इन दिनों में लास्ट संडे को जो वाक़या हुआ बम ब्लास्ट का हुआ है, आप उसको देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि क्या हालात हैं, छोटे छोटे बच्चों का, दहशतगर्दों ने क्या, किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर और कोई हालात नहीं है वहाँ हमारे मुल्क में रहने के। I have witnessed the situation of Pakistani Christians who have fled to Bangkok, and those Christians just have sought survival in Bangkok. They have often lost a whole lot of money by selling their properties to be able to run away from their home country where they previously were professionally quite well established, even though the pressure always was very, very high on them not to really show their faith to the public.
But if they received severe threats against their lives or the lives of their children, they had to run away. And I have interviewed round about 20 families in Bangkok, and 18 out of the 20 were subjected to blasphemy allegations, which were, of course, wrong. इसलिए बराए मेहरबानी से हमारा कुछ ख्याल किया जाए हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ताकि उनका बेहतरीन मुस्तकबिल बन सके और उनके लिए ये डर और खौफ निकाला जाए, उनके लिए उनके जहनों से, उनकी सोचों से उनका डर और खौफ निकाला जाए कि हम कैद हैं यहाँ पर आकर। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कैद हैं इस मुल्क में, इन लोगों में हम कैद हैं, हम यहाँ, ये हमारा मुल्क नहीं, ना हम यहाँ रहना चाहते हैं। हम तो आगे की सोचते हैं कि हम आगे निकले, हमें निकालें यहाँ से, कुछ ना कुछ करके हमारे लिए निकालें। ये आपकी मेहरबानी होगी। हम आपके आगे दरख्वास्त करते हैं, आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी, हम जो यहाँ पर साइलम सीकर्स हैं, हम बहुत मुश्किलात में हैं। But all of the families that I have interviewed went through really hard times in their home country, and when they went to Bangkok, they registered at UNHCR. But the problem is that UNHCR is not able to fulfill their task to support those refugees if they are in a difficult health situation, for example. They are given an interview date 4-5 years from the time of arrival, which means for them that after a very short period they have to stay as illegals in the country because their visa often is only for 1 month valid. And then the Thai government, which actually is a military government in a kingdom, does not respect the rights of refugees even if they are registered with UNHCR. So often they are sent to jail under very, very humiliating conditions. I myself have seen prisoners in iron shackles that were welded around their wrists, around their feet, and they had to carry the chains to walk in small steps in prison. And also women were held in very, very stuffed cells together with regular criminals, and all this just because the Thai government has not signed the Geneva Convention for Refugees of 1951. हमारे पास कोई वसाइल, कोई ज़राए नहीं है कि हम अपने ख़ानदान को रन कर सकें, अपने ख़ानदान को आगे लेकर चल सकें। जैसे कि और भी बहुत सारे लोगों ने आपके साथ शेयर किया होगा, बताया होगा यहाँ के हालात का। अब जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं वो उससे ज़्यादा हम 2-4 हो रहे हैं। हम यहाँ बैठे 2-4 हो रहे हैं। हालात सुन कर हम परेशान हो रहे हैं कि क्या हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे लिए फ़िक्र की जाए। अगर आप हमारी फ़िक्र करेंगे, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा, खुदा आपके साथ होगा और आपकी भी मदद करेगा और आपके वसीले से हमारी मदद होगी। खुदावंद आपके साथ और आपको बड़ी बरकत दे। हमारा ख्याल कीजिए। हम यहाँ नहीं मरना चाहते, ना हम वहाँ मरना चाहते थे, ना हम यहाँ मरना चाहते। इन हालात में, मुश्किलात में हमें इत्मीनान दिया जाए, हमारी तसल्ली के लिए हमारी रहनुमाई की जाए, हमारी मदद की जाए और हमारे साथ हमारा साथ दीजिए। They cannot send their children to school. They do not have a work permit, so after very little time, usually their savings are used up, and the families do not know what to live on. If they have health problems in the family, it's very, very hard for them to afford a doctor, and UNHCR only supports financially if a family member has to be in a hospital for a longer time, but not if someone has cancer, for example. Then UNHCR says you don't have to stay in hospital permanently, so we cannot support you financially to buy pills for treatment or whatsoever. And I was very shocked when I saw this situation that the international community, which has created UNHCR to support refugees, completely fails to support those who have arrived in a metropolis like Bangkok. You would assume that there are institutions in place, that there are regulations in place that effectively allow to handle the
problem of refugees living under such difficult conditions. And therefore, I really urge the international community to work hard to make UNHCR work more effectively. Interview dates must be given within maximum 1 year time to allow them quickly to be shifted to a safe third country, or even to be rejected and sent back to their home country. But the worst situation is to be kept in limbo for a very long time, losing important times for training of their children, and keeping family members in a difficult health situation in very, very difficult circumstances.